Hello everyone, welcome to Science My Soul, Unquatrium to everyone. Today we are going to start the first chapter of class 11th, okay? And the chapter is Living World, okay? एक क्वेश्चन हर साल इससे आता है और हमारा टारगेट है 360 आउट ऑफ 360. ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे करना है ये, है ना? पहले मैं आपको शॉर्ट नोट दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी एंड देन मैं आपको हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकता है. तो आप मेरे साथ बने रहें 360 आउट ऑफ 360 के लिए. ओके, फिर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ओके, growth, reproduction, ability to sense environment are the features of living organism. Who is the Darwin of 20th century? Ernest Mayr. It is important. The biggest spin-off of taxonomic studies was recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. अर्ली मैन कुड इजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएमिनेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. अर्ली मैन जो थे वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस कर सकते थे. हाँ, कर सकते थे. दिस इज ट्रू. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है. सही है. व्हाट इज कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन अमॉन्ग फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस? क्या है कॉमन मेथड? फ्रेगमेंटेशन. रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाई? रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का? क्योंकि देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ. ठीक है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिवाइड करते हैं, वही उनका रिप्रोडक्शन भी होता है, वही उनका ग्रोथ भी होता है. ठीक है, हम लोग इसलिए बोलते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मरते नहीं है कभी, है ना, इमोर्टल होते हैं, क्योंकि वो मरते नहीं है, वो डिवाइड कर जाते हैं दो में. ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ को क्यों नहीं कर सकते हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस. क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं फ्रॉम इनसाइड, नॉन लिविंग फ्रॉम आउटसाइड. ओके, नेक्स्ट, properties of tissue are not present in constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell. True. The sum total of all chemical reaction occurring in a living body is called metabolism. What is the most obvious and technically complicated feature of all living organism? Consciousness. The patient is brain dead and has no self-consciousness. Such patients are never come back to normal life. They are considered living or non-living? Living. Dash effect reproduction, photo period, in seasonal breeders both in plant and animals. In binomial nomenclature, important है, each name has two component, generic name and specific epithet. What is the full form of ICBN? Full form क्या है? International Code of Botanical Nomenclature. How many species are known and described till now? 1.7 to 1.8 million. Okay. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria, which is provided by ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. Both the words in biological name, when handwritten, जब हाथ से लिखा जाता है, separately underline किया जाता है और printed in italics में print किया जाता है. क्यों? To show their Latin origin. Biological names are generally in Latin and written in italics. All living organisms can be classified into different taxa on the basis of characteristics. This is known as classification. According to binomial system, how the first letter of the first word and the first letter of second word in name of an organism are written respectively. Binomial system के अनुसार पहला लेटर पहला वर्ड का और दूसरा लेटर पहला लेटर दूसरा वर्ड का कैसा लिखा जाता है? पहला लेटर जो होता है पहला वर्ड का वो कैपिटल होता है और पहला लेटर जो होता है दूसरा वर्ड का वो स्मॉल होता है. व्हाट इज एल्सेटियंस? ये एनसीईआरटी में लेकिन आंसर नहीं दिया है. इट इज़ अ वेराइटी ऑफ डॉग स्पीसीज और ब्रीड. The word systematics is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Taxonomic categories, taxonomic groups are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. This is true. What is the basis of taxonomy? Identification, nomenclature and classification are the basis of taxonomy. The earliest classification were based on user or economic importance of various organisms. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. This is true. Felidae and Felis represents which taxonomic category? Felidae is family and Felis is a genus. What is the scientific name of human? Human, Homo sapiens. Potato, Solanum tuberosum. Leopard, Panthera pallidus. Solanum, Petunia, Dhatura are the genera belongs to which family? This is Solanaceae.
The group of individual organisms with fundamental morphological similarities are called species. Order and other higher taxonomic categories are identified best on aggregation of characters. This is true. Fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum, and these all belong to phylum Chordata. As we go higher from species to kingdom, then what will happen to the number of common characters? The number of common characters will decrease. Okay. आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको ब्लैंक्स भरना है जिसमें होगा स्पीसीज, जीनस, जीनस के बाद आप क्या होगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. इसके लिए एक ट्रिक आता है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. कीप्स फॉर किंगडम, पॉट्स फॉर फाइलम, क्लीन फॉर क्लास, और फॉर ऑर्डर, फैमिली फॉर फैमिली, gets for genus, and sick for species. Find the odd one out from following. It's so simple. Chordata, carnivora, solenum, mammalia, solenum. Okay. I'm sorry. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level because common characters are less. Okay. Man, Homo sapiens. Housefly, housefly का क्या होगा, Musca domestica. Mango, Magnifera indica. Wheat, Tetrica mastivum. Find out the odd one. Sapindales, Anacardiaceae and Polis. The odd one is Anacardiaceae. Identify A and B. Tetrica mastivum, Triticum, Polis, Policy, Polis, and Monocotyledons and Angiospermi. Dash is the storehouse of collected plants, animals that are dried, pressed, and preserved on sea. That is herbarium. Herbarium serves as a quick referral system in taxonomic studies. This is true. Indian Botanical Garden (IBG) is situated in Howrah, and National Botanical Garden is situated in Lucknow. What is the main purpose of Botanical Garden? Identification of plant. Okay. Which taxonomical aid uses living plants for studies? Botanical Garden. Name the taxonomical aid which is used for study and a reference of both plants and animal specimens. Biological Museum, or you can say museum. Name the taxonomical aid where wild animals are kept in protected environment under human care. Zoological parks, or you can say zoo. What is the main aim of zoological parks? Learn about food habit and behavior of wild animals. In key, a pair of contrasting character is called couplet. Okay. Couplet represents the choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one and rejection of the other. True. Each statement of couplet in the key is called lead. What does monograph contain? Information on any one taxon, which contain the actual account of habitat and distribution of plant of a given area. Flora. Taxonomical aid, which is useful in providing information for identification of names of species found in an area. That is manuals. Taxonomists prepare and disseminate information through दो चीज होते हैं, manuals and monograph. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. True. Thank you everyone. Keep subscribe and like my video. Thank you.